Interim budget. Interim budget is a statement that comprises detailed documentation of every expense that the government will incur and every penny that the government will make in the coming few months until the new government comes into power. It also includes income and expenses made last year. It allows the government to seek parliamentary approval for drawing temporary funds from the Consolidated Funds of India. What is customs duty? Taxes imposed on imports. In addition to generating revenue, customs duties also serve to protect the domestic industry or sectors like agriculture in retaliation against measures by other countries. आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को हमें मिलकर के इसे सिद्ध करना है। चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो या फिर हमारे फॉरेन पार्टनर्स, आत्मनिर्भर भारत सभी के लिए विन विन संकल्प है। What is demands for grants? Demands for grants are statements of estimates of expenditure from the Consolidated Fund. The Lok Sabha votes on them. Generally, each ministry or department presents its demand for grant. What is indirect tax? In the case of indirect tax, the burden of tax can be shifted by the taxpayer to someone else. Indirect tax has the effect of raising the price of the products on which they are imposed. Customs duty, central excise, service tax, and value-added tax are examples of indirect tax. What is receipts? In the capital account of the Consolidated Fund, receipts are grouped under three broad heads: public debt, recoveries of loans and advances, and miscellaneous receipts.
What is public debt? The difference between the borrowings and repayments during a year is the net addition to the public debt. Public debt is split into the internal debt, money borrowed within the country, and external debt, funds borrowed from non-Indian sources. Internal debt comprises treasury bills, market stabilization scheme, ways and means advance, and securities against small savings. What is GDP? GDP or Gross Domestic Product is total market value of all final goods and services produced in the country over a period of time, usually 1 year. Increase in GDP or GDP growth rate indicates the overall health of the economy. What is fiscal deficit? When government's revenues from various sources fall short of its entire expenditure, it has to borrow money to meet the shortfall. The excess of expenditure over receipts is called fiscal deficit. Higher fiscal deficit may result in higher rate of inflation. नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। नई संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बुधवार को सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। ये मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी और अंतरिम यानी मिनी बजट है एक तरह से। और इस पूरी चर्चा में बजट में क्या कुछ खास है, देश के लिए, देश के लोगों के लिए, इस सब पर अपना नजरिया रखने के लिए हमारे साथ जो मेहमान रहेंगे उनका तारुफ मैं आपसे कराता हूं। हमारे साथ जुड़ेंगे नागेश कुमार, आप निदेशक और मुख्य कार्यकारी हैं ISID के। सुभाष सी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे, आप अध्यक्ष और MD हैं MMC ग्रुप के, SMC ग्रुप के। और R गोपालन हैं हमारे साथ, जो पूर्व सचिव हैं वित्तीय सेवाएं वित्त मंत्रालय से। और सुनील कांत मुंजाल हमारे साथ जुड़ेंगे, जो पूर्व अध्यक्ष हैं CII के और CII सार्वजनिक नीति परिषद और उसके भी अध्यक्ष हैं। तो इस सारी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और चर्चा में सबसे पहले हम आपको बता दें कि देश की वित्त मंत्री ने जो आज बजट पेश किया है, और एक तरह से इस बजट में, अंतरिम बजट में बहुत सारी बातें जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं अगले 5 साल में। और PM आवास के तहत ये 3 करोड़ घर बनाए गए, ये बात इसमें कही गई है। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और बजट की जो बड़ी बातें हैं उन्हें आप लगातार हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से बजट में देश के लोगों के लिए राहत जारी की गई है। मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को 30 करोड़ रुपए वितरित किए गए। स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया। The budget outlines 4 major pillars on which the agenda for the coming year is to be built upon. We take a pause and we connect with Shri Rahul Garg, Chairman,
and we will discuss further with him on these ideas that the budget has outlined. And Rahul ji, the budget speaks about 4 major sections of society whose aspirations and whose ambitions will power India's growth in the days ahead. It talks about Garib, Mahilaएं, Yuva and Annadata, who will form the bedrock on which we build upon our economic growth. Could you elaborate on how addressing their needs and their welfare will be the foundation on which we move ahead? Rahul ji, are we connected? राहुल जी हमसे अभी नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, लेकिन आर गोपालन जो हैं वो हमसे कनेक्ट हो गए हैं। गोपालन साहब, आज का जो बजट पेश किया है, अंतरिम बजट पेश किया है देश की वित्त मंत्री ने, एक बहुत बड़ी बात है जो कही गई है कि इस पिछले 10 सालों की जो तपस्या है, इसका साधना है, इसका परिणाम ये हुआ है कि देश में 25 करोड़ गरीब अब गरीब नहीं रहे, वो गरीबी रेखा से बाहर आ गए। गरीबी को मुद्दा बनाया जाता था, गरीबी नारों में रहती थी, गरीबी पर बहुत सारे चुनाव लड़े गए हैं, चुनाव जीते भी गए हैं, गरीबी हटाओ देश बचाओ इस तरह की बातें भी हुई हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि 25 करोड़ ये कम बड़ी संख्या नहीं होती है? पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज्यादा है ये नंबर, कितनी बड़ी बात मानते हैं आप इसे? So it's a very big achievement, I should say. It's a multi-dimensional poverty index. To bring down the number of people by 25 crores is a very, very big achievement. It also is a good thing to know that, I mean, poverty is measured not only by income, but also by other health, education, other parameters. So it's a wholesome way of finding out how the poverty is in the country. It's a very good achievement, I would say, and there are many components to it which they have done, which means increasing expenditure on health and directing it appropriately, on education, on skill development, on loans availability to the people, to mudra and those kind of things, improving infrastructure in a very, very big way, and giving support to farmers by way of PM Kisan, Fasal Bima Yojana and those kind of things. And those who are even at the most bottom level, take them to NREGA and food schemes, give them 5 kgs per person. Those kind of schemes have really helped to improve the multidimensional poverty index in the country. It's in all a great achievement. Right. Mr. Rahul Garg has reconnected with us. Mr. Garg, we are talking about PM Kisan and other initiatives directed at the farming community. And in today's interim budget, the finance minister highlighted the fact that private and public investment will be promoted, particularly in post-harvest activities with focus on enhancing modern storage facilities, aggregation and so forth. At this juncture, how important would you say this investment or this step is for moving ahead for the welfare of our Annadatas? Mr. Garg, are we connected? So this is very clear that not only for Annadata. Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, please. But they can't hear me. May please continue, Mr. Garg. I would say that not only for Annadatas as farmers, but also for the but also for the consumers of the goods, which are so important for livelihood. Such initiative of making investment in agri sector is very essential, very appropriate and very effective way of channelizing the economy, because it serves 3 purposes. One, it helps the people in the farmer community get their livelihood in a stronger fashion
participate longer in the supply chain and therefore benefit from there. Also, it helps moderating the prices because you have better infrastructure for the ultimate consumption that happens of the goods produced through such infrastructure. And thirdly, when the money circulates, it creates the additional demands. And hopefully with good rains and good infrastructure, we would be able to make a significant difference with this initiative. Right. Mr. Gopalan, we have been talking about farmers. Let us talk about rural infrastructure and rural development in the broader framework. The interim budget mentions the cluster-based development of aspirational districts. So could you elaborate on how the aspirational district program has contributed to rural development so far, and what is the prospect in the coming days? You see, there are two things which in this budget I am very much happy about, is continuing the program on the aspirational districts, especially these districts which are at a very, very low level in terms of incomes and all other various other parameters on education and those kind of things, to ensure that these districts are given separate funds in such a way that there is a holistic development of those blocks and districts, which will ensure that these people are able to catch up with rest of the people in the country. Right. So in that sense, that's a very, very significant scheme which has been running very successfully, I should say, and continuing that further is a good thing. And we hope there should be an end date by which this is completed. So we take a very tough target of achieving all the objectives in a reasonable period of time, because from then on, those people will have to eke a livelihood and earn a living. So that's the best way to go forward in my view. जी गोपालन साहब जी, एक बात ये भी है जो एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, जब 2014 में एनडीए सरकार आई उस समय देश में 400 स्टार्टअप्स बताए जाते हैं, आज उनकी संख्या बढ़कर के 1 लाख से ऊपर हो गई है। देश में इन स्टार्टअप्स के अंदर जो युवा जिनको रोजगार मिला, जाहिर तौर पर उन्हें स्किल्ड होना उनके लिए कंपलसरी था। इसका मतलब जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर भी काम हुआ है पैरेलली। जो देश की जो इकोनॉमी है, जिसे जो 5 ट्रिलियन की जो बात हुई है, ये जो बूस्ट आया है इकोनॉमी में, क्या ये स्किल इंडिया, क्या ये स्टार्टअप्स, ये जो शुरू में जो ये बैटिंग की गई थी, क्या ये उसका परिणाम है, क्या ये उसके सिम्टम्स हैं, संकेत हैं? You see, both the skill development program and the startup kind of help which is being given to lift people to set up their own enterprises as an entrepreneur and then earn a living and contribute to the economy in a big measure. And that is something which is very, very important. But on the skills development, as you mentioned, there is a lot to go. Though we have got 1,100 ITAs have been taken over by various people, private sector, and so many other programs have been started. Please understand that we have a huge task ahead of us. Between the age 15 to 29, we have quite a good number of people, maybe 20-25%, who are not in education, not in employment, not in training, which means they are free. They are expecting some jobs to come, but they are not able to get. So the problem as we see it is very big, and skill development is a very, very important component for us to tackle or attack that particular problem. At the same time, the question of Mudra Yojana as well as this startup kind of schemes are going to help these kind of people who are entrepreneurial in nature to take up to various types of businesses and MSMEs kind of programs, so that they will be in a position to contribute to the economy, increase their GDP, increase their wealth as well. Right. Thank you, Mr. Gopalan. We have with us Mr. Kamal Baliji, Chairman, CII Southern Region.
And Mr. Bali, we have been talking about startups. And in this context, the interim budget mentions the creation of a corpus with rupees 1 lakh crores to facilitate deep tech-based initiatives for the youth specifically. And how do you think this is likely to further give a boost to our startups and technology initiatives, particularly given the kind of volatile, evolving landscape that we are currently living in? Mr. Bali, are we connected? Yeah. Yes, I got it. I think good afternoon and thank you for having me on your channel. So I think this is a very as you rightly put it, this is one of the highlights of the budget, this 1 lakh crore. This is an area where the whole where India needed to invest, because if you look at our R&D investments, is about 0.6% of our GDP, which is very low compared to other economies. Right. So I think this is something which will help to get the support in the R&D area, and I think because in the context of changing economic and business landscapes, India needs to do much better. So I think this is something which is going to help. We need to see how this is going to be deployed institutionally, but I think to my mind this is one of the highlights and very positive statement and progressive statement by the finance minister. Right. Kamalji, also we have been talking about rural development a little while back, and we have been talking about a comprehensive program for dairy development. So the finance minister also mentioned how India is the largest milk producer in the world, but in comparison, the productivity is something that needs to be bolstered further. How do you think this comprehensive program is going to help in creating value to India's dairy sector and give it a competitive edge on the larger global platform? I think the theme, if you look at the underlying theme in many of these initiatives by this government, I think we have seen it in the past also. I think it is basically deploying digital tools to really change the economic landscape and to bring value and benefits to the end user and to the producer. So I think this is a common theme which we have seen across in many areas. If you look at, for instance, if I were to give you an example of the fintech and the financial inclusion aspect, today the number of fintech transactions are largest in India in the whole of the world. So I think that's something which we have seen very regularly with this government, and I think to my mind this is very good. And I think initiatives like these, a cooperative movement, I think these will take the Indian economy and make it much more inclusive and start. Therefore, the Indian economy will start firing on all cylinders. So whether it is agriculture, whether it is industrial sector, or whether it is the services, and I think this is something which we needed. To my mind, this also is a very positive step. We of course need to understand the details, but I think directionally this is again a very positive step by the government. बिल्कुल, थैंक्स। हमारे साथ स्टूडियो में दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेश कुमार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निदेशक हैं आप और मुख्य कार्यकारी हैं ISID के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सुभाष सी अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं, आप अध्यक्ष हैं, MD हैं SMC ग्रुप के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले नागेश जी, ये जो चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं, इस चर्चा में कुछ 2-3 बातें निकल करके सामने आई हैं कि जब देश में 2014 में जो वर्तमान सरकार है वो आई, तो उस समय 400 स्टार्टअप्स मुश्किल से रहे होंगे, जो बढ़कर के आज 1 लाख के ऊपर चले गए हैं। बात यहाँ पर यह भी आई कि 25 करोड़ लोग गरीबी के रेखा से बाहर आ गए हैं, ऊपर आ गए हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत प्रयास किए गए हैं संकल्पबद्ध तरीके से। इस तरह की कुछ बातें इसमें आई हैं। ये भी आया कि भाई स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो काम हुआ,
क्योंकि स्टार्टअप्स अगर 1 लाख हुए हैं तो उसमें कुछ स्किल्ड युवाओं की जरूरत पड़ी होगी। और मैं जो जानना या समझना चाहता हूं, या जो मैंने कुछ आंकड़े देखे, चीन बना है, वो जो एक ग्लोबली जो उसने राइज किया इकोनॉमी में, वो सबसे बड़ा उसका रूट कॉज था उसके स्किल डेवलपमेंट। और उसने स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है उसके लाखों में थे, और उन्हीं से वो दुनिया के लिए एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। भारत क्या उस दिशा में जा रहा है? और उस दिशा में अगर जा रहा है तो संकेत कितने सुखद हैं? नहीं, मेरी समझ में आई थिंक ये बजट जो है, हालांकि इंटरिम बजट था, इससे बहुत ज़्यादा आशाएं करना ठीक नहीं था, क्योंकि इंटरिम बजट है और रियल, और इसलिए हम इसको रिव्यू बजट कह सकते हैं। लेकिन जितनी उनकी कंस्ट्रेंट्स थी, उसमें जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो सारे पॉजिटिव हैं। और वो विकसित भारत का जो एक मूल मंत्र हमारे सामने है 2047 का विजन, उस तरफ पुश करने में सहयोग करेंगे। और जैसे आपने कहा कि स्किल डेवलपमेंट और उद्योग धंधे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से चाइना आज जहाँ पे पहुँचा है वो पहुँच पाया, तो वो सारे इसमें संकेत मिलते हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जो स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस और मोमेंटम वित्त मंत्री ने लास्ट ईयर दिया था, उसे कैरी फॉरवर्ड किया है, 11% उसे और बढ़ाया है। तो उससे उद्योग धंधों में की डिमांड बढ़ती है और वो आगे उसका मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा। दूसरे, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इस सरकार ने जोर दिया है, नई मिनिस्ट्री बनाई गई है और बहुत सारे कौशल योजना जो प्रधानमंत्री की है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है, उससे स्किल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। और जैसा आपने बताया कि 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हो गए हैं, वो स्टार्टअप्स मतलब तीसरा हम केंद्र बन गए हैं स्टार्टअप्स का पूरे विश्व के मामले में। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि और ये जिस तेजी से इसमें बढ़ोतरी हो रही है अग्रवाल साहब, उसमें हमें लगता है कि इसमें तो हम नंबर 1 होने जा रहे हैं। देखिए, भारत में एंटरप्रेन्योर्स की कमी नहीं है और ये हमने कई बार प्रूव किया है। आइडिया की भी कमी नहीं है, आइडिया की, इनोवेटिव आइडियाज की कोई कमी नहीं है। हर आदमी इनोवेटिव है। यस, मतलब और अपॉर्चुनिटी मिलती है और कैपिटल मिलता है तो हम सबसे आगे हैं। अपॉर्चुनिटी और फंड, हाँ जी, बड़ा फैक्टर है। करेक्ट। तो इसलिए है ना, 1 लाख करोड़ का आज एक फंड का भी इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि युवाओं के लिए जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, वो आईटी सेवी है और जो स्किल्ड हैं, उनके लिए 1 लाख करोड़ का ये फंड बनाने की बात करी है। तो ये अपने आप में एक बहुत आगे तक जो आप कह रहे हैं ना, इंडिया कैन बी नंबर 1 इन स्टार्टअप्स, तो वो इट विल हेल्प इन मेकिंग इंडिया इन नंबर 1। क्या ये रास्ता हमें 2047 की तरफ ले जाएगा सर? डेफिनेटली 2047 विकसित भारत जो हमारा लक्ष्य है, और तो इसके लिए यही है कि हम जो आज गवर्नमेंट ने कहा है, एक तो देखो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इन्होंने कहा है कि जो डिमांड है इनकम टैक्स की 25,000 और 10,000, 2015 तक जो इनकम टैक्स की डिमांड पेंडिंग है वो 1 करोड़ टैक्स पेयर का माफ़ कर दें, क्योंकि उनकी कलेक्शन कॉस्ट इससे ज़्यादा है रिकवरी से, और वो इरिटेशन क्रिएट कर रहा है। या जो टैक्स पेयर है उनको प्रॉब्लम, क्योंकि वो ज़्यादातर डिस्प्यूट वाली डिमांड्स हैं तो वो माफ़ कर रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है ना जी। फिस्कल डेफिसिट जो इन्होंने डिक्लेयर किया है कि दिस ईयर 5.8% रहेगा जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो गैप है, और नेक्स्ट ईयर 5.1% टू अचीव द टारगेट 4.5% फिस्कल डेफिसिट टारगेट इन 25-26 का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है ना। तो आज फाइनेंस मिनिस्टर ने हालांकि कोई नए रेट घटाए हैं, न इनकम टैक्स कोई किसी प्रकार का रेट न घटाया है, न बढ़ाया है, न कोई रिलीफ दिया है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन जो स्टेप्स हैं वो पॉजिटिव ही। Nagesh Kumar ji, we have been talking about infrastructure in the budget. So the finance minister also says कि infrastructure
development has focused on physical, social and digital infrastructure. And the term digital public infrastructure came up repeated times during her speech. Could you throw some more light on the idea of digital public infrastructure? And just a while ago, one of our guests mentioned how we are increasingly employing digital tools to change the landscape of governance. So how is this digital public infrastructure and digitalization of governance and development processes impacting our growth story? Now, I think digital public infrastructure is something in which we can really claim to be doing something very innovative for the benefit of people at large, not select people. And so the backbone of that digital public infrastructure is our unique identity. Every Indian has an Aadhaar card, and which is linking up with all government services, direct benefit transfers. As the finance minister said in the budget, we saved 2 lakh crore rupees by doing the direct transfers to the Jan Dhan accounts of beneficiaries, no leakage. So whatever is being deposited by government is reaching the people. So this digital public infrastructure enabled that. And a very important achievement of digital public infrastructure 38 लाख करोड़ रुपया भेज दिया उन्होंने बिना किसी लीकेज के. And दूसरे, the universal payments interface, the transactions of very small amount or large amount are done digitally. Every single person on the street and vendors of vegetables or fruits are receiving their payments through digital means, which is a very big revolution. I think we are ahead of the curve, even beyond the advanced economies like United States or Germany in the digital payment system. And G20 का आयोजन हुआ तो उस समय भी उन्होंने जो है सबको वॉलेट में डाला, सब लोगों ने भारत के डिजिटल पेमेंट को समझा. Absolutely. So this अभी is फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ. So this is empowerment in its best form, that every single person, every single individual has a digital identity and is able to transact, the financial things, and it has a, cascading effect on the formalization of economy. The money is getting transferred to the bank accounts of, informal sector is also getting formalized. So this is a very major development. बिल्कुल. अग्रवाल साहब, एक चीज और है, सरकार सबका साथ सबके विकास की बात करती है, लेकिन जब हम इसे पैसे की भाषा में समझते हैं तो क्या हमें यह समझा जाए कि अगर हम एमएसएमई सेक्टर को, अगर हम उसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं, अगर हम सूक्ष्म और लघु उद्योग, गांव-गांव, घर-घर में होने वाले काम को अगर प्रमोट करते हैं, तो तब ये अपने आप में सबका साथ सबका विकास कंसीडर किया जाना चाहिए. उस दिशा में क्या काम है? देखिए, एमएसएमई सेक्टर के अंदर वैसे तो बैकबोन है इंडिया की एमएसएमई सेक्टर, और गवर्नमेंट इस पे फोकस भी कर रही है, और विकसित भारत भी हमारा तभी बनेगा जब हमारा हर गांव के अंदर, हर छोटा सेक्टर, हर एमएसएमई सेक्टर ये विकसित होगा. और इसको विकसित करने के लिए जैसे रूरल फोकस योजनाएं बनाई हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, आज भी डिक्लेयर की है. पेमेंट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ा रहे हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने आज 11,10,000 करोड़ का 10 लाख करोड़ से बढ़ा के कर दिया है. तो ये सब हेल्प कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में. और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 रुपये बढ़ता है तो जीडीपी हमारी 3 रुपीज़ बढ़ती है, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी, इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है. कोऑपरेटिव्स का क्या कनेक्शन है एमएसएमई सेक्टर को लेकर? कोऑपरेटिव वो उसे कितना कोऑपरेट करेगा? जिस तरह से अमित शाह साहब ने उसको कई सारे उसमें सुधार करके और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है. को बेसिकली कि वो पेट्रोल पंप भी खोलेंगे, वो बैंक भी चलाएंगे, वो स्कूल भी चलाएंगे, उन्हें जो जो करना है सब करेंगे.
हाँ जी, ये एक ज्वाइंट मूवमेंट है, सब लोग इकट्ठा होके कोऑपरेटिव एक बनाते हैं और वो उसमें एक कमेटी बना दी जाती है, वो कमेटी डिसीजन लेती है, गवर्निंग काउंसिल, और वो डिसीजन लेती है बिजनेस कितना है, कितना बड़ा बिजनेस खोलना है, कितना फंड की रिक्वायरमेंट है, कितना फंड रेज करना है, ये सब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव डिसाइड करती है। तो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट होता है, इससे सबका विकास होता है। उसमें जो लोग डिसीजन लेते हैं, जो लोग कमेटी के मेंबर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, तो जो काउंसिल के थ्रू वो उसमें एक लिखा जाता है पूरा रूल्स रेगुलेशंस। तो ये एक अच्छा मूवमेंट है और इससे सबका विकास हो रहा है। राइट, नगेश कुमार जी, कोऑपरेटिव्स के कॉन्टेक्स्ट में traditionally the cooperative sector has had a tremendous impact on our agriculture and allied sectors. So the budget also talks about increasing the focus on the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, and we've been talking about focusing further on aquaculture and setting up of 5 aquaculture parks. So what is the likely benefit that we envision coming out of this? I think the important point to note is that in the cooperatives, when so many people doing the similar kind of activities come together, form a self-help group, some common facilities can be developed which can be used by and harnessed by everyone, right, without incurring additional costs. So I think that principle led to success of Amul. Amul became such a big success, phenomenal success. Cooperative से corporative and we became largest producer of milk because of the success of cooperatives. Right. Now we need to take that message of success of cooperatives to other sectors. And so today the initiative about fisheries. So again, you need trawlers and other equipment which are beyond the capacity of individual fishermen. Now, if they form a collective, a cooperative, and they invest in shared assets through that cooperative, they can all benefit. So I think this mantra of cooperatives being harnessed for collective social good is very important, and India has many successes to show in that, and I'm very sure that taking it forward to other sectors, and fisheries is only one, but many others can benefit from this. Right. कमल बाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम एक सवाल जरूर लेंगे, और सबसे बड़ा सवाल ये भी है बाली साहब की भारत में जो खास तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में वैल्यू चेन क्रिएट करने की कोशिश की है, और उसमें अभी तक किसान उत्पादन कर रहा था और कहीं ना कहीं चीजें वो घाटे में चली जा रही थी, लेकिन वहां पर अभी प्रोडक्शन के बाद में किस तरह से उसको वेयर हाउस के थ्रू या शीत गृह हैं उनके थ्रू, कोल्ड चेन के थ्रू उसको भंडारण उसका कैसे किया जाए, फिर उसका प्रोसेसिंग में किस तरह से उसको आगे एक चेन वो है, और तीसरी उसकी मार्केटिंग की चेन है, चाहे वो ई नैम हो चाहे जैम हो, इन सब चेन को, इस कड़ी को जो कनेक्ट करने की कोशिश की है, वो कनेक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर को किस दिशा में ले जा रहा है और किस स्पीड से वो आगे बढ़ा रहा है? No, I think that's a very good point you make, and this is what I think the previous speakers have been discussing. And I think the example was, we were talking about the digital backbone to all of this. And I think there are 2 or 3 aspects which I would like to talk on this. I think number 1 is actually the value chain, going up in the value chain, not just producing one particular item and leaving it there. So I think and this cooperative movement is helping this whole thing, because the future leadership is all about partnerships and collaborations. In fact, partnership is the future leadership in the emerging world. So I think that's one thing which is very important. So therefore you partner for a particular outcome, not only to produce a particular product, but to provide a particular outcome. So that's something, that's why the cold chains, the logistics value chain, all of this is very important, including something like ONDC, which we have talked about, Open Network for Digital Commerce, which means that this whole digital commerce will get democratized,
it will be available to everyone, whether it is an agriculturist or a mom and dad shop in a small city, a kirana shop. So I think this is something, the whole, if you look at the common theme across everywhere in this government's plan is that to get everybody together, to include everyone and run a movement. And that's what is something very, very interesting to my mind. And this is the way forward if we want to really bring in population scale changes in the country. And that is what we have seen in many of the things which previous speakers have talked, something like Jam Trinity. I mean, how the whole financial inclusion took place. You had the Jan Dhan account, you had the Aadhaar card, and you had the mobile phone, the Jam Trinity, what they say. So I think that has already shown us several examples of how the benefit goes to the last mile. And I think this is something we need to continue. So that's my take on this. Yeah. Mr. Bali, it's very interesting that you mentioned the term partnership. Nagesh Kumar ji, if we see the idea of partnership in a broader light, the finance minister laid down this roadmap for Viksit Bharat at 2047, in which she mentioned that all parts of the country would be made partners in the overall economic growth. How do you think this interim budget in particular and the overall initiatives that we have seen in recent years in general can contribute to this particular step in making all regions and all states a partner in India's overall economic journey? Yeah. No, I think partnership is the essence of all of these, development projects and programs. And in industry, if we talk, I think the value chain concept is essentially based on all the different links of the chain becoming partners working in a synchronized manner, and so one thing leads to the other, and so one part of the link in the value chain becomes more efficient and it has effects on the others. And so I think the value chains being harmonized and strengthened and made more efficient, and finance minister also talked of linking the MSMEs to the global value chains and making them hooked up with the global markets. And there I think ONDC, which Mr. Puri talked, is a very important initiative because these big e-commerce entities like Amazon or Flipkart have become big success, but then they may be catering to a certain class of MSMEs and not everyone, and so those which are excluded can now go and get connected themselves with ONDC. Right. So ONDC becomes an empowerment tool for the left outs among the MSMEs and other players, and they get hooked up and become partners in the progress. Right. और हम देख रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, इन सब चीज़ों को लेकर कैसे एमएसएमई सेक्टर को, उस पर जो सरकार की अप्रोच है वो किस तरह से विकसित भारत की दिशा में देश को लेकर जा सकती है, यहाँ पर ये भी चर्चा हो रही है। विकास को लेकर वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार की अप्रोच ने बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी योजनाओं के जरिए देश के हर तबके तक पहुंची है। The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor.
the fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas, and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once in a century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays so that the social economic transformation is achieved. Right. We come to a question for Mr. Vipin Sondhi, Chairman, CII, Industry and R&D.
Mr. Sonthi, we have been talking about digital infrastructure and how bringing in digital tools has transformed the landscape of governance. And the idea of UPI, which is in fact contributing to 46% of India's total, of the world's total digital transactions coming to India, has been a key enabler in transforming India's overall financial inclusion landscape. And the budget in particular talks about how digital tools can transform our rural infrastructure and specifically sections of society who are right at the grassroots. In this context, how do you think our farmers or the sections that the budget mentions, our Yuva Shakti, can harness such digital infrastructure and build on it in the near future? No, thank you, ma'am, for the question. We have the capability, and we've shown it again and again, that we can leapfrog technologies and we can actually become a benchmark for the world to be able to show how technology can reach the grassroots and be easy to use so that relatively less skilled people can use them to their benefit, like for DBT. And generally the entire India stack has been a revolution. Where I would now want to add in vein on the budget is actually this game changer as far as the creation of a corpus of 1 lakh crore for a 50-year interest-free loan for deep tech and strategic, including defense, technology and innovation. I think this will push not only the digitalization process forward, but this will push our Yuva to get involved in the creation of technology and then in the usage of technology for reaching out to the grassroots as much as possible. To me, this is a big game changer, and if executed properly, which this government is capable of doing, this should stand us in good stead for 10, 20, 30 years. बिल्कुल, ग्रास रूट डेवलपमेंट जो है वो बहुत मायने रखता है किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए। अग्रवाल साहब, इसमें एक छोटा सा मेरा सवाल कम है, जिज्ञासा ज़्यादा है। इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, उसकी इकोनॉमी से भी आप जुड़े हुए हैं, उसका अध्ययन करते हैं। एक तरफ है इंडस्ट्री और दूसरी तरफ है वर्सेस एग्रीकल्चर। वहाँ पर विधायी जो संसद में डिसीजन लिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, एक बात है, लेकिन जब उन्हें ज़मीन पर उतारने की बात आती है तब बैंक बीच में इन्वॉल्व होते हैं, सिस्टम इन्वॉल्व होता है जो नीचे होता है। उसका जो भरोसा है, क्या वो भरोसा उतना ही एग्रीकल्चर सेक्टर पर बन पाया है जितना इंडस्ट्री पर है? मैंने देखा है या मैंने सुना भी है कि जो इंडस्ट्री लगाते हैं, छोटी बड़ी भी, मैंने वो कहते हैं कि बैंक मैनेजर हमारे घर बैठकर हमें लोन देकर जाते हैं। इधर थोड़ा सा उल्टा है। इसमें कुछ, इस गैप को कम करने की कुछ आप संभावना देख पा रहे हैं? देखिए, जो इंडस्ट्री होती है वो फॉर्मलाइज्ड होती है। हाँ, वहाँ प्रोसेसेस होते हैं, स्टाफ होता है, डाटा होता है, सिस्टम्स होते हैं, तो वो उनका ट्रस्ट बैंकों में तुरंत बन जाता है। और जो एग्रीकल्चर या स्मॉल फार्मर्स या स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता इस तरह का। उनमें ट्रस्ट बनने में वो अंडरस्टैंड करके तो वो सॉफ्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी बैंक को। मतलब वो उसी हिसाब से उसको देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो लोन दिया जा रहा है, तो ये गवर्नमेंट की एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ। डायरेक्शन तो है, गवर्नमेंट तो चाहती है। हाँ, तो बैंक को भी, फिर भी बैंक को डायरेक्शन, बैंक के बहुत नाना करके हाँ करते हैं। हाँ, तो इसमें लैकिंग है कि वहाँ पे ट्रस्ट कम होता है और इंडस्ट्री में ट्रस्ट ज्यादा होता है बैंकों का। मैं इस सवाल को सप्लीमेंट्री सवाल के तौर पर आपसे और थोड़ा सा साझा करना चाहता था, थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता था। देश में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और हर क्षेत्र का अपना अलग अलग एग्रीकल्चर की तासीर है, तस्वीर है। और देश में मैं ऐसे भी किसानों को जानता हूं जो मॉडल फार्मर हैं, जिन्होंने वो सारा प्रोसेस, वो रेगुलेशन, वो नॉर्म्स वो फॉलो किए होते हैं, वो तभी सक्सेस फार्मर बने होते हैं उसी के बेस पर।
क्या एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर देश में मॉडल फार्मिंग को लेकर काम नहीं होना चाहिए कि ये 1 एकड़ है, इसके लिए ये मॉडल है, ये 2.5 एकड़ है, इसके लिए ये मॉडल है, इसके लिए ये प्रोसेस को फॉलो करना होगा, ठीक है, और इसके लिए इतना बजट लगेगा, इसके लिए 10 लाख का ये मॉडल है, 20 लाख का ये मॉडल है, ये 2.5 एकड़ पर अप्लाई होगा, ये 1 एकड़ पर अप्लाई होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसकी संभावनाएं मैंने बहुत आसानी से देखी हैं, परंतु उसे उस सिस्टम में और बैंकों को उसमें भरोसा दिलाया जाए, उस पर थोड़ा सा अभी चलने की जरूरत है। हाँ, मेरी समझ में आई थिंक एग्रीकल्चर हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा भाग है और मतलब 40% या 50% लोग उसके ऊपर निर्भर करते हैं। तो जितना काम हम एग्रीकल्चर की तरफ दे पाएं, जितना ध्यान उस तरफ दे पाएं, उतना ही कम है, मतलब क्योंकि बहुत सारी एक बड़ा तबका उसके ऊपर निर्भर करता है। एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी होती है या एक क्योंकि मैं सवाल इसलिए पूछने की कोशिश की कि जब मैंने पूरे देश को घूमा इस मामले में और किसानों को देखा, तो मैंने ये पाया कि एक किसान आधा एकड़ यानी 2000 मीटर में वो हर साल 50 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा है, सब कुछ खर्चे निकाल करके। एक लड़की जो है हरियाणा में यहीं पर वो 1750 स्क्वायर मीटर के अंदर 1 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है पौध बेचकर, ठीक है। सबके अलग अलग मॉडल हैं। यही पड़ोस में जो है बड़ौत में मैंने देखा पिछले हफ्ते ही एक लड़का जो है 10,000 टन शहद पैदा करके वो करीब 150 करोड़ रुपए का बिजनेस करता है हर साल। तो मेरा ये कहना है कि जिन फॉर्मुलेशंस की बात हो रही है, जिन रूल एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है, जिस प्रोसेसर्स को अडॉप्ट करने की बात हो रही है, तो ये हमने इंडस्ट्री में तो हमने चूंकि ये लंबे समय से चला आ रहा था इसलिए हम समझ गए, लेकिन वहां क्या हो रहा है ये किसी को कुछ पता नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि हमारे देश में जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरीज हैं एग्रीकल्चर में, छोटे फार्मर्स के जो बहुत उन्होंने इनोवेशंस किए हैं, उनको आगे बढ़ाना, रेप्लिकेट करना, नॉलेज शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो एक मतलब जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो दूसरे लोगों को भी पता चले और दूसरे फार्मर्स को भी और उनका एक स्टैंडर्डाइजेशन हो उसको। और ये फसल बीमा जैसे जो प्रयोग सरकार ने बात इंश्योरेंस की है वो तो इंडस्ट्री में भी होता है, वो होता है, तो उसको बढ़ाया जाए। और जो नेचुरल फार्मिंग की आज बजट में बात की है कि 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग की तरफ हम एनकरेज करेंगे, उनको सारी सपोर्ट और मदद दी जाएगी कि कैसा वो फर्टिलाइज़र और कैसा वो बीज और आगे बढ़ाएं उसे खरपतवार वगैरह। तो वो भी एक बहुत अच्छा कदम है मेरी समझ में, और उसमें भी जो सक्सेस स्टोरीज निकल के आएंगी उन्हें शेयर किया जाए दूसरे फार्मर्स के साथ, जिससे पूरा देश उससे फ़ायदा उठा सके। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का भी इसमें काफ़ी रोल आ रहा है, एग्री टेक्नोलॉजी, हाँ है ना जी। तो उसमें टेक्नोलॉजी से वो रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे छोटे से एरिया में मैक्सिमम प्रोड्यूस किया जाए, प्रोडक्टिविटी बेटर की जाए। तो ये टेक्नोलॉजी का आज के टाइम में बहुत इसका रोल प्ले हो रहा है, राइट, एग्रीटेक। Mr. Sondhi, we come back to you. We've been talking about agriculture and the role of technology in agriculture, and earlier we were discussing the idea of taking technology down to the grassroots level. And you mentioned the 1 lakh crore corpus, which in particular is going to play a very critical role in initiating such technology-based initiatives and ensuring their penetration. So now, in today's world, we are dealing with the evolution of technology at a very rapid pace, and the government is also putting in place strategies for artificial intelligence and quantum computing, machine learning, and all such disruptive technologies, which are in fact going to be, ruling the future, so to say. But there is still a concern that most of these technologies remain concentrated to very specific pockets, more of urban areas and limited to certain sectors, and they do not always reach our rural population or sections of society who can probably benefit from them in ways that we haven't envisioned yet. So how do you think the interim budget and this particular corpus that has been set out, how can this actually help in taking such initiatives and niche technologies to the grassroots level where they can have potentially massive spillover effects?
Yeah, and that's a great question, and no doubt about it. As has been mentioned, really, we are self-sufficient in agriculture, and we are a proud nation, but we have to also take up productivity and make it easier for the farmer to detect weather patterns, to detect crop sowing patterns, etc. One way in this, let's say this outlay of 1 lakh crore is to identify a certain part, let's say 20%, only for agricultural technology and implementation. That this will be used for crop sowing, weather patterns, market information, whatever it is, that technology will only go in towards agriculture, so that the focus is drawn upon towards agriculture and solutions are found for agriculture. The other is the various, let's say the KVKs, the Kisan Vikas Kendras, we need to start educating them from the point of view of how to use the technology that is currently available and which will be available in the future. We'll only be good as the usage of the technology. और तो उसका स्किलिंग बहुत ज़रूरी है, उसको अपग्रेडिंग बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पे हमें ग्रामीण इलाकों में ज़रूर जाना पड़े। बिल्कुल सोंदी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे साथ तमाम जो मेहमान जुड़े उन सभी का धन्यवाद। हमारे साथ नागेश कुमार जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल साहब जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमल बाली हमारे साथ जुड़े थे, राहुल गर्ग हमारे साथ जुड़े, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने बजट के चर्चा के दौरान इस 1 घंटे के दरमियान ये समझने की कोशिश की कि किस तरह से देश का जो ग्रामीण भारत है, देश का जो कृषि क्षेत्र है, वो किस तरह से सरकार उसे लेकर किस तरह से संकल्पबद्ध है, किस तरह से वो गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है। इन सब चीज़ों को हमने इस चर्चा के दौरान समझने की कोशिश की। हमें अभी इजाज़त दीजिए और चर्चा जारी रहेगी बजट पर।